ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और आई पीस भी है, दैट मीन्स ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास रहता है, आई पीस आई के पास रहता है। एंड द ट्यूब लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल length of the objective and the focus of objective and the focus of eyepiece. If the distance of the distinct vision is 25 centimeter, magnification of the microscope is, तो ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। So we'll just apply this. So this is equal to L. L is the tube length, which is 40 centimeter divided by FO. Focus objective length is 2 centimeter into D, 25 centimeter divided by FE, which is focus of eyepiece, which is 4 centimeter. Centimeter is gone, so ये है 10 gone, so this is 5, so 5 into 25 is 105. तो इसलिए the answer is B. Thank you.